जी स्टार्ट करते हैं प्रीवियस लेक्चर को, जहीं से छोड़ा था वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। हमने छोड़ा था इंजर्शन, सर्चिंग, उसके अलावा डिस्प्ले, फिर इंजर्शन एट एनी और डिलीशन एट एनी इंडेक्स। सबसे पहले बात करते हैं दो कॉमन सॉर्टिंग टेक्निक्स के बारे में जो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। द फर्स्ट वन इज सिलेक्शन सॉर्ट एंड द सेकंड वन इज बबल सॉर्ट। बात करते हैं सबसे पहले बबल सॉर्ट के बारे में। बबल सॉर्ट आप लोगों ने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के अंदर पढ़ी हुई है और उसके अंदर आपने ये चीजें डिफाइन की होंगी। बबल सॉर्ट के बारे में बात करने से पहले हम एक्सेल की शीट के अंदर चलते हैं और बात करते हैं। बच्चों बबल सॉर्ट बेसिकली करती क्या है कि बबल सॉर्ट के अंदर हमारे पास पेयर्स की फॉर्म में डाटा चलता है। मेरे साथ रहिएगा क्योंकि आज के आर्टिकल में मैंने काफी सारे पोर्शंस को कवर करवाने की कोशिश करनी है। मैं इसी प्रोग्राम को थोड़ा सा यहीं पे डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ और क्योंकि सामने जो आर्टिकल बना हुआ है मेरे ख्याल से उसको लेकर चलना ज्यादा अच्छा है एज कंपैरेटिवली अगर हम खुद से कोई चीज डालें तो। बच्चों एलिमेंट 4 हैं तो हमारे पास जो सॉर्टिंग की रेंज है वो मैं हाईलाइटेड कर रहा हूँ, ये वाली रेंज है, ये हाईलाइटेड रेंज है हमारे पास। मेरे साथ रहिएगा। ड्राई रन के लिए मैं एक्सेल की हेल्प ले रहा हूँ क्योंकि हमारा एरे है तो यहाँ पे बॉक्सेस एरे की फॉर्म में यूज हो रहे हैं। सो 12, 34, 6 एंड -98 दीज आर द एरे और हम सिर्फ पहले इन के इंडेक्सेस भी मेंशन कर देते हैं। द इंडेक्सेस ऑफ दिस वन इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3 और हमने लेस देन इंडेक्सेस पे चलना है। और आपको ये चीज क्लैरिटी के साथ एक आइडिया है कि हमने सिर्फ इन्हीं इंडेक्सेस को हमने सिर्फ और सिर्फ सॉर्ट डाउन करना है रेदर देन दिस वन। अब बात क्यों कर रहा हूँ कि इसी को सॉर्ट डाउन करना है, क्योंकि जब हमने इन 3 को सॉर्ट कर लेंगे तो ये वाला ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो जाएगा। लिहाजा जो हम एक आउटर लूप लगाएंगे उसकी जो रेंज होगी वो 0 से लेके लेस देन एलिमेंट्स तक होगी, लेस देन एलिमेंट्स तक होगी। तो भाई अगर हम इसको लेस देन एलिमेंट्स तक लगाएंगे तो क्लियर बात है, ये चीज इसमें कोई एम्बिगुइटी नहीं है कि ये साइज से एक दाना पीछे चलेगी यानी एक स्टेप पीछे चलेगी। आउटर लूप के अंदर हम क्या, इनर लूप के अंदर हम एक और लूप लगाएंगे और जिसका काम होगा कि वो 0 से लेके एलिमेंट्स -1 तक। ये चीज तो मैं भूल गया, ऊपर बनाया भी हुआ है। और ये वाली जोन सी है इसको हम लेस देन एलिमेंट्स रखेंगे। लेस देन एलिमेंट्स क्यों रखेंगे इस पे रीजन बताता हूँ। अब जरा गौर से देखिए मैं आपके सामने के इसको सॉर्ट किया, लाइक यहाँ पे 6 आ गया और यहाँ पे 12 आ गया। बात को समझने की कोशिश करिएगा कि भाई यहाँ पर 6 आ गया, 12 आ गया और यहाँ पर सॉरी यहाँ पे -98 भी है एंड पे, यहाँ पे -98 आ गया, यहाँ 6 आ गया और जब ये 12 आ गया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर 34 आ जाएगा। लिहाजा इसको सॉर्ट करने की जरूरत नहीं है। लिहाजा हम एक स्टेप कम चलाएंगे। एक स्टेप कम के लिए हमारे पास एलिमेंट 4 है तो हमें 2 तक चलाना है। देखिए 2 तक चलाना है तो आउटर लूप का काम कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आप सॉर्ट करना चाहते हैं, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स को सॉर्ट करना चाहते हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स यू वांट टू सॉर्ट इन द बबल सॉर्ट। आई इज लेस देन एलिमेंट्स। सर स्क्रीन शेयर कर दें कोड ब्लॉक्स की। जी मैं, ये अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, ये अब्दुल्ला ने जो याद कराया ना ये बहुत अच्छा है। अच्छा ओके, so this is I plus plus. So this is your outer loop and this loop is only for how many number of elements you want to sort. How many number of elements you want to sort. That's it. Nothing else. ये तो यहाँ इस बात पे तो कोई ambiguity नहीं है। And then what about the inner loop? The inner loop concept is, मैं दोबारा चलता हूँ Excel की तरफ। The inner loop concept is basically the bubble. Bubble mean the bubble. The bubble mean the paired. And it compare the two adjacent element. If the first element is greater than second one, then swap them. So in a bubble there are two paired and if these are two paired in this form you can see that the color is like light green कर लेते हैं। So which one is a greater? If the first one is greater than second one then swap them. इनको तो कोई नहीं swap किया, then the loop again goes to next where J started from this position. तो मैं ड्राई रन साथ ही बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए। When J started from 0, so G 0 and this is 0 plus 1 यानी J plus 1. So if this is J plus 1 then it compare the both values. If array of J, if array of, you can see array of J is greater than array of J plus 1 then swap them. It's a simple and common notation for this one. Then swap them. Okay, but in this scenario that it's not greater than, then the loop goes to next point. The go move to next point. Yes, this one is a greater than, then swap them, and this one is this one and this one is this one. अब जरा मेरे साथ रहिएगा and then again loop goes to the next level
the j's increment and the value of j is 2, and compare them. You can see, compare them whether this one is greater than, yes, then minus 98 is here and the 34 is there. So you can see the inner loop is also less than and equal to minus 1. You can see when ith value is 0, when ith value is 0. So if I is 0, now again the outer loop increment by 1 and now the value of I is become 1. अब जरा गौर से देखिएगा बच्चों, अब यहाँ पे क्या अप्लाई होने लगा है. Again j started from 1 and you can see this is in a sorted form, and we highlight this one with another color, and like this one is like purple, and it means according to just for dry run it is sorted. And I think so there is no need for again resort this element, because in the first iteration when the value of I is 1, so we have to sort this one. This one means 34. We have sort the 34. So if we sort the 34, then again the loop iterate with 1, and now the value of I is 2 1, sorry, not 2, it's 1. So again the loop come into the inner loop, the control come into the inner loop, and the value of j again started from 1. And if the 1 is set, the first element, the 0 element in a pair, the first element in this form array of 0, and the second element is array of 1 is greater than, then swap them. So the new value is 6 here and 12 there, and again j increment by 1. This is a greater than, yes, exactly, this is a greater than. So minus 90 is there and the 12 is there. Again अब मैं जरा बोलने लगा हूं, again can we check this? No, sir. No, sir. सर Yes. नहीं सर. So No, sir. ये तो sort हो गया. yes, we have already sort this one, so there is no need to again resort this one. So we have mentioned minus I. Why? Because when the value of I is 1, it skipped the one element, because we have already sort in a previous iteration. So there is no need to sort this one, because the loop will be terminated, because according to this one the loop will start it from 1 to 0 to 1, sorry, 1 to 1 can, 0 to 1. Again the value of I is become, sorry, 2. There is a last iteration, and again it is started from this initial point, and the value of j is 0. So this one is greater than, yes, this one is greater than, then it skipped this one, replace this one. And again you can see whether it can check this one. No. No, sir. No, Why? sir. Because it sort this one, and if it sort this one, so you can see the element value is 4. 4 minus 1 3, 3 minus 2, 3 minus 2 1. So the iteration from 0 to 1, और वो एक ही iteration है और वो एक ही चली है, क्योंकि जैसे ही 1 हुआ j तो लूप टूट गई, और आप भी कहते हैं कि होना भी नहीं चाहिए. आप कह भी रहे हैं कि सर होना भी नहीं चाहिए, और हम होने भी नहीं दे रहे, और लूप होने भी नहीं दे रही. So we have completely dry run the bubble sort. Where is our code block? So we can clearly mention for int j started from 0 and j is less than, you can see the j is less than elements minus 1 minus I, and where is j plus plus, and within loop we just apply the if structure and check if array of j is greater than array of, in ascending order. We can also apply in this structure in a descending order. Int temp is a temporary variable that hold, this is a simple swapping procedure, swap function. You can also call this function separately. So array of j is assigned with array of j plus 1, and array of j plus 1 is assigned with, hold the value of this one. Now after this one, अब मैं इसको थोड़ा skip ना कर लूं, ये बार बार values लेता देता रहेगा, तो हम sort कर लेते हैं. A dot bubble sort and A dot display member function. So this is the bubble sort, this function bubble sort, and this is the end of bubble sort, end of bubble sort. So there is a little bit mistake. Where is the little bit mistake? There is this, oh, semicolon is missing. Okay, so we run this code, and you can see on your screen this is already in ascending order according to our dry run. So can we implement this bubble sort for descending order? Just only changing the conditional operator, and you can Yes see sir.
you can see the output will be in descending order. There is nothing new. This is a simple whole notation. So guys, समझ आ रही है आप लोगों को? यस Yes, सर। sir. यस Yes, सर। sir. Yes, sir. Yes, sir. ये पूरे का पूरा जो कोर्स है ना जी, वो ऐसे चलेगा। ये ऐसा ही है, इसमें किसी ना किसी की या तो एक्सेल की हेल्प ले रहे होंगे या मैं कोई गुद्दड़ सिंह। अभी मैंने आपको टाइम कम्प्लेक्सिटी का एक न्यूमेरिकल भी करवाना है, कुछ एक दो न्यूमेरिकल्स भी करवाने हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा न्यूमेरिकल्स को लिखूंगा कैसे। अब मैं यही सोच रहा हूँ कि किसी दिन ना कॉपी पे रिकॉर्डिंग करके मोबाइल की तो वो अपलोड करूँ, 2 4 6 न्यूमेरिकल करके ना, वो उसके कम्प्लेक्सिटी के। लेकिन वो मसला ये है कि बस वो टाइम ही नहीं मिल रहा, और दूसरा ये है कि वो वीडियो बना के अच्छी सी तो फिर मैं वो दोनों के ग्रुप्स में ऐड कर दूंगा। ओके, अब the next one is selection sort. Here we apply the bubble sort for descending order and we apply the selection sort for ascending order. पढ़ी हुई है ना? Yes, sir. तो Yes, करवा sir. दूं या कर लेंगे? करवा दें सर। करवा दें सर। अच्छा, सारा कुछ ही करवा देना मैं है, ये खुद करवा नहीं। दें कर सर। लेंगे चलिए अब मैंने लिखना सर, शुरू। जैसे आपसे। I started from 0। मैं इसका ड्राई रन आप लोगों से पूछूंगा, फिर मुझे बताना है आप लोगों ने। I is, ओ यार ये कहाँ टाइप हो रहा है? And I is less than ELEME and elements minus 1, सेम एलिमेंट्स, क्योंकि एक एलिमेंट्स तो लास्ट पे जो रह जाता है वो उसको सॉर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये तमाम लूप्स में ऐसा ही है। When there is a small is equal to I, and in a for loop there is another loop structure who's depending on I. So there is j, and j started from I, and j is less than equal to last element को भी ऐड करना पड़ेगा, and this is j plus 1 exactly। और अच्छा ठीक है, उसको चलाया और 1 तक चला गया। सर्च करेगा, क्या सर्च करेगा? हाँ, यस, स्मॉल इंडेक्स सर्च करेगा, बिल्कुल। इफ array of small is greater than array of, yes, जाए तो फिर क्या करे? small is equal to I, and yes, then if our first predicted value is not equal to small, then it means there is another small value whose index is holded by this small, and not, sorry, it is for j। गलती हो गई जी, मैंने j लिखना था, बोला j है। और and this is swap function, and not just I'm use this function here, this function, this is simple। अब मुझे कोई ब्रीफली बताना चाहेगा कि what is doing here, and array सर of ये if की कंडीशन में भी जे आएगा? where is, no, it's not, no, that's good। Array of small and array of I is equal to array of small, and array of SMA small is equal to temp। Yes, this is the a dot sele selection sort and a dot display। मैं एक बार ड्राई रन करके निकाल लूं, फिर उसके बाद आपको दिखाता हूँ। एंड दिस इज द एंड ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट, दिस इज द एंड ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट कहते हैं। तो इसका ड्राई रन जैसे उसका कराया तो करा देता हूँ। सिलेक्शन, ओके। सो the first one, for the bubble sort, it runs for descending order, and the selection sort run for ascending order। नहीं जी, so this is, नहीं, अभी भी वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, रुकिए एक मिनट, यहाँ तो कोई रन टाइम एरर आ गया। हाँ एग्जैक्टली, कहीं मिस्टेक हुई है। आप देखते हैं जी, पहले एरर आया हुआ है, कहीं मिस्टेक है हमारे पास से। सो तो ये इफ की जगह पे एरर है, ये फॉर लूप में ना, जिधर आपने स्मॉल जे लिखा है, इधर आपने वो करली ब्रैकेट्स नहीं लगाई। ये इसकी जरूरत नहीं है। There is no need for curly braces because this statement is considered as a part of this this one। तो ये तो इसका कोई नहीं है। वैसे भी मेरा सिस्टम थोड़ा स्लो मुझे फील कर रहा है। अच्छा, कोई और चीज क्या आप बताना चाह रहे थे? सॉरी, किसी को नजर आ रहा हो कहीं पे कोई एरर या कोई ऐसी चीज हो मेरे से निगलेक्ट हो रही हो? दोबारा से पढ़ता कर लेते हैं। I started from 0, a less than सर this आई one। नॉट इक्वल टू की जगह आई इक्वल टू नहीं आएगा? नहीं, इफ की स्टेट नहीं, if this one is equal to, it means that there is no smallest value, and the smallest value is present at I, so then there is no need to swap। But if the algorithm found a smallest value at any index, then it store the index in a small, and it compare whether the I is not equal to small if there is a some
small value exist in the array, then we know that I is never and ever equal to small, then swap them. बताता हूँ इसका, सिर्फ मैं एक बार देख लूँ. सिलेक्शन सॉर्ट I स्टार 0, I is less than elements minus 1 and I प्लस प्लस, कहीं छोटी सी कोई लूप शूप ना छोड़ दी हमने. 0 एंड I स्टार्टेड I प्लस 1 कर लेते हैं, ये ज्यादा एक Yes, आइटरेशन sir. Yes. नहीं, ये एक आइटरेशन बचाई है हमने वैसे. एंड j is less than and j प्लस प्लस एंड small if greater than array of j, then the small is equal to j. ये लूप खत्म सर हो वही गया. +1 लगना था ही के नहीं साथ. नहीं, वो उसके साथ तो कोई ऐसा इशू नहीं है. अच्छा जी, पहले इसका ड्राई रन देखते हैं, फिर बाद में देखते हैं जी. सो देयर इज ओवर एरे, देयर इज 12, देयर इज 34 एंड देयर इज 6 एंड देयर इज -98. पहले ड्राई रन समझे ना, फिर आपको समझ आ जाएगा कि हमारा कोड बिल्कुल ठीक चल रहा है. एंड देयर इज I started from and there is started from I plus 1 कर लें, I कर लें, but I plus 1 is the best option. 2 elements less than elements. अब ड्राई रन क्या है, you can see. अब मैं आपके सामने ड्राई रन चलाने लगा हूं. हमने यहां तक सॉर्ट करना है. No, the value of I is 1. The value of I is 1. That's mean the J started from here. So not here, it is here. J. So the J started from here to onward. And there is a small, SMALL, small. अब the small को देखिएगा कि मैंने small क्यों लिखा हुआ था. The value of small is 0 because we set within this one SMA small is equal to I. और जब I करेंगे तो जो I की वैल्यू होगी small इस लूप में आने से पहले ही होगा. And now we compare, जरा गौर से देखियो, array of small if greater than array of j. You can see array of small. What is the value of array of small? Array of small is 12. Small is 0. Array of 0 is 12. Whether array of small, it means this is 12. मैं इसको थोड़ा बड़ा करना चाहूंगा, इसको नजदीक करता हूं ताकि आपकी स्क्रीन पे क्लियर नजर आए. So whether the 12 is greater than 34, no, it's not greater than 34, so it's skip. And now j increased by 1. A new value of j is this one. j value, j की j index है, j 2 पर आ गया है. ये वैल्यू की बात कर रहा हूँ, array of j की बात नहीं कर रहा. Array of small is 12. 12 is greater than 6. Yes, it is greater than 6. It come into the body of if. This is. अच्छा, इस if की भी बॉडी लगा ही देते हैं. पता नहीं कोड ब्लॉक को गुस्सा चढ़ गया हमसे. कोड बिल्कुल 100% ठीक है जी, आई नो दैट. ठीक है, बिल्कुल ठीक है. ओके, सो दोबारा चलते हैं एक्सेल की तरफ. सो यू कैन सी इट अपडेट द वैल्यू ऑफ array of small with array of j. The j is 2, so it's 2. Again j increased by 1. So the array of small, the 2, there is 6. Array of small 2 है small में, तो array of 2 6. And array of j array of j is -98. Greater than, yes. So update the small with j and the j is 3. लूप ब्रेक होगी बच्चों, लूप ब्रेक होगी जी. हम बाहर आ गए, लूप ब्रेक हो गई. लूप ब्रेक हुई, लूप ब्रेक होने के बाद उसने कहा कि क्या शुरू में रखा हुआ I, the value of I is 0 is not equal to 3. हाँ ना जी, तो बिल्कुल. तो वो कहता है swap them. So the -98 is there and 12 is there. And now I increased by 1 and the value of I is 1. समझ आई? जी Yes, sir. सर. And now the j Yes, is sir. I plus 1. अब दोबारा कोड ब्लॉक की तरफ चलते हैं. तो देखो, I started from 0, I is less than and equal to j and I plus plus and j started from small. ऐसे ही किया हमने. And the j started from I plus 1 and the j is less than तो स्क्रीन शेयर कर सर लो. कोड शेयर कर दे. वो मैं उधर से बोलता जा रहा हूँ. और ये सो I 0 से स्टार्ट हुआ, लेस देन एलिमेंट -1 ठीक हुआ, I प्लस प्लस. स्मॉल 1 से स्टार्ट, 1 कह रहा हूँ, I से स्टार्ट हुआ. स्मॉल देखें, I से स्टार्ट कर रहे हैं, उधर भी तो I लिखा हुआ था. तो J स्टार्टेड फ्रॉम I प्लस 1 एंड J इज लेस देन एलिमेंट्स एंड J प्लस प्लस. और फिर इधर डाल ही देते हैं. फिर इसको गुस्सा अगर इस चीज का आया हुआ है तो भैया तुम्हारा गुस्सा यहाँ खत्म कर लेते हैं. ये लो भाई. सो इफ array of small is greater than array of J, तो then small is equal to J. और ये वो ये स्वैप है यार, इसमें तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है. एंड दिस इज एंड ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट. अच्छा, सिलेक्शन सॉर्ट है, चलाते हैं. अब शायद गुस्सा खत्म हो जाए इसका. नहीं, सिस्टम मेरा ना बता रहा है स्लो. ओ चल गया जी, चल गया. लो जी, चल गया. सिस्टम मेरा स्लो है, मुझे पता है. ये देखिए अब आया, ये आउटपुट भी नहीं आ रही ना थी, अब आ गई है. सो दोनों लूप्स को मैं चलाता हूँ अब इकट्ठा. दिस इज बबल सॉर्ट एंड दिस इज सिलेक्शन सॉर्ट. एंड नाउ अब मैं ना इसको एक को डिसेंडिंग ऑर्डर, एक सेंडिंग ऑर्डर. ठीक हो गया, चल गया जी, चल गया, कोड चल गया, जो चल गया.
You can see this is for bubble sort and this is insertion sort. Bubble sort descending order में, insertion sort descending order में कर रहे हैं. यहाँ तक किसी को कोई क्यूरी है तो प्लीज जी क्लास समझ आ गई है जी? कोई क्यूरी जी है सर। ताकि यस सर। एंड ऑफ नो सर, नो क्यूरी। सिलेक्शन, एंड ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट मेंबर FUN CTIUN मेंबर फंक्शन. स्टॉप करते हैं जी इस वीडियो को यहीं पे.